morning, dear children. Welcome back to your science class. So, I hope that you all are preparing for your first unit test. Learn properly, dear children. See all the notes, go through your textbook, and I know that you all will be scoring good marks. Dear children, today we will start our lesson number 4 and it is soil. Do you know, children, what is a soil? Soil is the uppermost layer of the earth. Okay, earth का the गोल earth we have, उसकी जो uppermost layer है, जो हम देखते हैं, जिसे हम जमीन कहते हैं, that is known as soil. So, we will be learning a lot of fun and interesting things about soil in this lesson. So, let us start our class. So, let us read it carefully. Soil is the uppermost layer of the earth. Plants grow in soil. What is soil? It is the uppermost layer of the earth. The uppermost layer of the earth. Plants grow in soil. Plants soil में grow करते हैं. Roots of plants get water and minerals from the soil. हम जब भी प्लांट को पानी देते हैं या फिर प्लांट जो है वो अंडरग्राउंड वाटर यूज करता है, उसके साथ साथ सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड अर्थवर्म्स लिव इन सॉइल. सो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स, अर्थवर्म्स वो सॉइल के अंदर रहते हैं. ओके, नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल आखिर फॉर्म कैसे होती है? लेट अस सी. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट टेक्स मेनी इयर्स. सॉइल को फॉर्म होने में बहुत सारे इयर्स लगते हैं और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. ये प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता. ओके, formation of soil is shown in the following pictures. The pictures we will see in this video lesson will tell us that how exactly the soil is formed. See over here, dear children. ये uppermost layer of earth है, right? इनमें जो भी बड़े बड़े rocks के pieces होते हैं वो atmospheric pressure की वजह से या फिर heavy rainfall और the heavy flow of water like this, ऐसी बहुत सारे factors होते हैं जिनके वजह से ये बड़े बड़े rocks break हो जाते हैं and उनके जो छोटे छोटे pieces हैं वो earth के uppermost layer पर आ जाते हैं. And this is how the soil is formed with the help of very big rocks. Okay, so soil is formed by the breakdown of very big rocks. So soil is formed by the breakdown of rocks into tiny pieces. So see over here, ये जो देखो, these are the big rocks. These are breaking down and वो छोटे छोटे pieces में form हो रहे हैं. Rocks are heated by the sun and cooled by cold weather. So, with the help of the sunlight, rocks बहुत ज़्यादा hot और warm हो जाते हैं and because of the cold weather, उनमें coolness भी आ जाती है. The continuous heating and cooling causes the rock to crack and break into small pieces. उनके वजह से rocks जो है वो टूट जाते हैं and वो छोटे छोटे pieces में convert हो जाते हैं. These small pieces are carried to different places and ये जो है rocks वो अलग अलग places पर पहुंच जाते हैं with the help of either the flow of water
or with the help of the wind, like such other factors. The pieces rub against each other till they finally become tiny particles of soil. ये जो pieces हैं, ये tiny particles बन जाते हैं. And वो किस तरह होता है? With the rubbing of the rocks. Rocks जो हैं वो कभी कभार land के हिलने से और because of the earthquake वो एक दूसरे से रब होते हैं and उसकी वजह से भी उनमें ब्रेक डाउन आ जाता है and they form into small particles. Dead plants and animals also get mixed with these pieces. See over here, these are the dead animals and then the plants, the insects, उनके सॉइल के साथ या रॉक्स के साथ मिक्स होने के वजह से वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. Thus, soil is a mixture of tiny pieces of rocks and remains of dead plants and animals. So, soil जो है वो rocks की tiny particles, tiny pieces and with the help of the dead animals or plants, the soil is formed and it is a continuous process, dear children. ये process कभी भी नहीं रुकता. I hope you all are clear with how the soil is formed. Now let us see what do we have next. It is our homework and what do we need to do? Draw the process of formation of soil in your notebook. आप अपने नोटबुक में अपने टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 23 रेफर करेंगे and then you will draw the process of formation of soil in your notebook. See, this is how you will be preparing it. You will make the rocks like this, then you will make the sun so that rocks जो हैं वो उनके heat की वजह से warm हो जाएं and then the breakdown, then the dead animals and plants, and then plants grow out from the layer of the soil. So this is the whole process of the formation of soil. कैसे heat and cold के वजह से या rubbing of the rocks के वजह से rocks छोटे छोटे pieces में form हो जाते हैं and then they get mixed with the dead plants and animals and then they are formed into soil. So dear children, I hope that you all are clear with this today's lesson. We will meet next time and we will see what does soil contain. Soil में और क्या क्या चीजें होती हैं? We will learn all about this, dear children, in our next class. Till then, draw the formation of soil in your notebook. And as and when this lesson is completed, I will send you the notes in the assignment section. So, आप उस assignment section में मुझे इस homework का भी photoshoot भेजेंगे. Okay, dear children. So, we will meet next time and we will learn a lot of things about soil and we will have a lot of fun together as well. Okay, dear children. Bye everyone. God bless you.